Previous video we have discussed the different causes of biodiversity. Already discussed the loss of habitat loss and fragmentation, over exploitation causes, and invasion of alien species to a local territory or local region. Today we'll discuss the next causes for loss of biodiversity, that is called coextensions. Coextension. Coextension means जदि गोटे ऑर्गेनिज्म दीटा ऑर्गेनिज्म परस्पर भितर म्यूचुअली डिपेंडेंट animal and plants associated in obligatory way, that is called correlation. That means केते गुड़िए ऑर्गेनिज्म परस्पर ऊपर डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट अर्थ जदि ये एक्जिस्ट हबो जदि ये स्पेसीज नंबर कमी गला तो ऑटोमेटिकली एई संख्या मते ऑर्गेनिज्म संख्या मते कमी जीवो ये मते एक्सटेंड हे यानी कोएक्सटेंशन अर्थ जदि दीटा ऑर्गेनिज्म परस्पर ऊपर निर्भरशील ये जदि आपको माइनस करा जाए ताले ये बंची परिबो जदि आपको माइनस करा जाए ये बंची परिबो ता अर्थ गोटिए जदि संख्या कमुची एक्सटेंट होउची ता संख्या विलोप हो जाउची तो ऑटोमेटिकली ए स्पेसीज मध्ये संख्या में ये मध्ये एक्सटेंट हो दैट इज कॉल्ड कोएक्सटेंशन. फॉर एग्जांपल host au the parasite host au parasite example parasite depends on host. तो जदि होस्ट एलिमिनेट हुए जदि होस्ट एक्सटेंट हुए ताहले ऑटोमेटिकली पैरासाइट मध्ये एक्सटेंड होता है केतोडी वास्प ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड आउट एग्जांपल जहाँ को कहते पोलेन पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म. पोलेन पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म. In some fig plants, fig flower, there's some male flower, female flower. Besides male flower, female flower, some sterile flowers are there. Sterile flowers. Some wasps come into that flower and laying eggs. So wasp and fig flower ए वास्प कौन करे ना जेतेबेले से एंट्री करे या माध्यम रे ए स्टाम पोलन ग्रेन पॉलिनेट होता है प्लांट रो एवं ए वास्प रो काम कोन होता है ये कौन फायदा पाइथा ना या भीतर एग लेइंग करता है रिप्रोडक्शन करता है वास्प. जदि आमे ए वास्प को माइनस कर दवा एलिमिनेट कर दवा रे तो ऑटोमेटिकली कौन हम ना फिग प्लांट रो पोलन ग्रेन आउ पॉलिनेट हे परिबो नाही तार मध्ये रिप्रोडक्शन हे परिबो नाही ये मध्ये संख्या आस्ते आस्ते कमी जिवो. जदि ए प्लांट को हम एलिमिनेट कर दबा तले ए वास्प मध्ये इंसेक्ट मध्ये आउ एग लेइंग करि परिबो नाही ये संख्या मध्ये आस्ते आस्ते कमी जिवो. सो फार मेन कॉजेस फॉर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कोएक्सटेंशन. तो जो ऑर्गेनिज्म गुडी को इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर टू एग्जिस्ट, if one number is the one species becomes extinct, then another species must be extinct. That is called co-extinction causes. In next causes, so I have discussed the four major causes
habitat loss and fragmentation, over exploitation, invasion of alien species, and coexistence. ये चारिटा को आमे कहूचे evil quadrant. Next, another some additional causes for loss of biodiversity. Environmental pollution. Next cause. Environmental pollution, water pollution होची, air pollution होची, soil pollution होची. तो ये सब pollution द्वारा केते गुड़िए स्पेसीज ए पॉल्यूटेड परिवेश रे एनवायरमेंटल रे से एग्जिस्ट करि पारंती नाही. देयर नंबर बिकम्स डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्टेड ऑफ कोर्स. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ पाई कोन तना फूड रो आवश्यकता अधिक पड़ी थाए. क्रॉप फील्ड रो संख्या कमी जाउची, पॉपुलेशन संख्या बढ़ी जाउची, तेणु ऑटोमेटिकली फूड रो आवश्यकता पे रिक्वायरमेंट करिया पई कोन हिताय ना क्रॉप फील्ड रे में अधिक पेस्टिसाइड यूज करूचे. ऑर्गेनिक वे रे न करी आमे विभिन्न पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज करूचे. जार फल कोन होची ना ये जो क्रॉप फील्ड रे में विभिन्न पेस्टिसाइड यूज करूचे, विभिन्न केमिकल्स यूज करूचे, एगुड़िक रेन वाटर द्वारा मूवमेंट करके विभिन्न लेक रे जाइके मिसुची. से लेक रे थिबा विभिन्न भेराइटी स्पेसीज रो फिशेस से माने फूड ग्रहण करछन्ते. तो ऑटोमेटिकली कोन होची ना सेही पेस्टिसाइड गुड़िक कंज्यूम करिबा द्वारा से माने डेथ होची. तो ऑटोमेटिकली से मानक स्पेसीज डिक्लाइन होची एवं they move towards the extinction. So in lead poison, lead विभिन्न डिजीज करूची, लीड पॉल्यूशन होची, विभिन्न यूट्रिफिकेशन मीन्स आमे विभिन्न पेस्टिसाइड्स केमिकल्स विभिन्न नाइट्रोजन अधिक आमे व्यवहार करछे क्रॉप फील्ड रे. तो रेन वाटर द्वारा से मूवमेंट करके विभिन्न पॉन्ड लेक रे जाके मिसुची. तो पॉन्ड रे कोन होची ना आल्जी ए नाइट्रोजन को कंज्यूम करके आल्जी ग्रो भास्टली ही जाउची. तो ऑटोमेटिकली कोन होची जब कहउछ ना अल्गाल ब्लूम, जब हम कहउछ अल्गाल ब्लूम, जा फल कहउछ ना टोटल वाटर बॉडी रो सरफेस एरिया कवर्ड बाय द algae, so no sunlight enters into inside the water body. तो sunlight water body रो भीतर को जाई पारुनी ताले the submerged plants and animals, different animals and plants are there in submerged stage on the bottom of the pond, so they could not get the sunlight, so they could not prepare its own food, so automatically say species गुड़िक डेड होचंती. तो सेमानकर संख्या मध्य कम होची और सेमाने मोर एक्सटिंक्ट लिस्ट पे जाउछंती. तो एई भली भाबे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा हमर एयर पॉल्यूशन होची. एयर पॉल्यूशन माध्यम रे मध्य हमर विभिन्न अफेक्ट पड़ुची विभिन्न इंसेक्ट मानक ऊपर. तो सेमानकर संख्या मध्य आस्ते आस्ते कमी जाउची. लाइकेन मध्य हमर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रो अफेक्ट पड़ुची. लाइकेन संख्या मध्य हम कमी जाउची. तो ऑटोमेटिकली कोन होची ना इंडस्ट्रियल फ्लो, इंडस्ट्री जो वेस्टेज वाटर जाई कि लेक रे मिसुची, से वेस्टेज वाटर माध्यम रे मध्य विभिन्न स्पेसीज संख्या मध्य आस्ते आस्ते डेड आड़ को जाउछंती और सेमानक संख्या मध्य कमुची और तेंस लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होची. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज सब मेन कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी. The next causes for loss of biodiversity, that is natural disturbance. Or climate change. Natural disturbance due to environmental pollution. This is for the natural disturbance, the main cause is environmental pollution. Forest fire
जंगल रे निया लागुछि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी मेन कॉज मेनली ह्यूमन एक्टिविटी से जंगल रे जदि निया लागिबो टोटल जंगल ऊपर अफेक्ट करूछि त निश्चित भाबे जेउ स्पेसीज संख्या रहउछि निश्चित संख्या कमी कमी जिवो नेचुरल डिस्टर्बेंस लैंडस्लाइड नेक्स्ट लैंड स्लाइड पत्थर उतरा खसिबा लैंडस्लाइड तो से जो लैंडस्लाइड होता है जहाँ पर स्लाइड होता है से जगह थी विभिन्न स्पेसीज मानक डेथ होता है तो ऑटोमेटिकली से एरिया से स्पेसीज सब हैबिटेट रही पारती नहीं तो से संख्या मत कमी था दैट इज द नेचुरल डिस्टर्बेंस ड्राउट 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 है कौन वर्षा अभाव होता है रेन वाटर न था रेन न था पानी की समस्या देखा दिए विभिन्न कल्टिवेटेड प्लांट्स दे कैन नॉट गेट द रेन वाटर so automatically drought condition comes and the species becomes dead and the number of species becomes towards the extinct point. So next is floods. बन्या ही था बन्या हेबा द्वारा कौन हुए ना विभिन्न गछ प्लांट्स विभिन्न ऑर्गेनिज्म डेथ ही थांती तो फ्लड माध्यम रे मध्य लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होता है पुणी डिजीज जेमती वर्तमान आमर चली कोरोना डिजीज दैट इज द नेचुरल डिस्टर्बेंस तो कौन से पैथोजेन आसिक डिजीज कॉज करि थाए और ताहार ट्रीटमेंट यदि इन्वेस्टमेंट है न थाए तार ऑटोमेटिकली बहुत संख्या स्पेसीज मध्य डेथ हो जिवे और सेमान स्पेसीज संख्या मध्य कमी कमी जीवो साइक्लोन all are comes under the natural disturbance but climatic change the glacier region the temperature greenhouse effect means the concentration of carbon dioxide become more and more nowadays so carbon dioxide रो परिमाण जदि बढ़ी बढ़ी जाउची एनवायरनमेंट रे तो ऑटोमेटिकली से एनवायरनमेंट टेम्परेचर मध्य बढ़ी बढ़ी जाउची जा कहते ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस आर मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड all are the carbon dioxide all are the greenhouse effect gas so सेमान को परिमाण जदि बढ़ी जीवो त ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज हो जाए जब टेम्परेचर राइज हो जीवो त ग्लेशियर गुडी को कोन होबो ना मेल्ट हेबा आरंभ तो मेल्ट हेबा आरंभ कले कोन होबो ना टोटली जलमग्न हो जीवो जा फलटे जो स्पेसीज रहंती लैंड एरिया रे से मध्य सिथियो बंची परिबे नै ऑटोमेटिकली से लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हेता तो क्लाइमेटिक चेंज मध्य जो नेचुरल प्रोसेस क्लाइमेटिक चेंज हेले मध्य चेंजेबल क्लाइमेट सहित मध्य केते स्पेसीज एडजस्टेबल हे पारंते नाही कोपेबल हे पारंते नाही तो ऑटोमेटिकली सेमानकर स्पेसीज संख्या मध्य कमी कमी आसीता सो दीज आर द मेन कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में विभिन्न एनएच रोड सब तैयार हो देखुथिबो जंगल काटी के सफा करके रोड तैयार हो तार तो फ्रैगमेंटेशन हो आमे गोटे रीजन को गोटे बड़ हैबिटेट रीजन को आमे खंड खंड कर रोड कर देले फॉर द ह्यूमन पर्पस तो ऑटोमेटिकली ए हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हेगा लॉस बोले फ्रैगमेंटेड हेगला जा फल रे एथिबा विभिन्न स्पेसीज मध्य से माने आउ सेमानकर ओरिजिनल हैबिटेट पाइले नहीं लार्ज टेरिटरी पाइले नहीं तो ऑटोमेटिकली सेमानकर संख्या मध्य कमी कमी जाय थाए so this is all about the causes of loss of biodiversity very important पिले तुमको परीक्षा रे पढ़िबो निश्चित habitat loss and fragmentation किपरि loss of biodiversity रो कॉज होची ओवर एक्सप्लॉइटेशन इन्वेशन ऑफ अलाइन स्पेसीज मध्य केमती बायोडायवर्सिटी को लॉस करूची कोएक्सटेंशन मध्य केमती बायोडायवर्सिटी को लॉस करूची एई चारिटा भितर निश्चित इंपोर्टेंट होची हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन
how lost the biodiversity, and due to over exploitation how lost the biodiversity, and due to invasion of alien species how lost biodiversity occurs. These are the main important questions for you. तुम आपको भल भाव पढ़ तुम ये यार डाटा बेस मन रख डाटा मन रख तुम चारोटी कजेस को बहुत इंपोर्टेंट पढ़ हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस केमती होची बड़ हैबिटेट लॉस केमती होची विभिन्न एनिमल्स प्लांट रो हैबिटेट केम लॉस होची जहा फल से संख्या कम होची जहा हम कहूचे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। फ्रैगमेंटेशन केमती होची बड़ टेरिटोरी हैबिटेट को केमती हम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा आम फ्रैगमेंटेड करूचे रोड तैयारी करूचे फ्रैगमेंटेड होची ह्यूमन जाइकी रहुची सी मध्य फ्रैगमेंटेड करूची तो ऑटोमेटिकली फ्रैगमेंटेशन होची बड़ हैबिटेट तो ऑटोमेटिकली सही हैबिटेट थिबा स्पीशीज को संख्या ऑटोमेटिकली कमी कमी जाउछ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होची। सो दीज आर द मेन इंपोर्टेंट कॉजेस habitat loss and fragmentation, over exploitation, invasion of alien species and coextensions. These are the four evil treated मन रखिबो ए चारटा कॉजेस को भलाय पड़िबो ता बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन केमते हमरो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कोची कॉज होची एवं नेचुरल डिस्टर्बेंस द्वारा मध्ये हमरो केमते लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होची। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये जो लॉस होची आमे ताको केमि कंजर्व करबा संरक्षित करबा जदि बायोडायवर्सिटी को आमे कंजर्व न करबा तार टोटल इंपैक्ट टोटल इकोसिस्टम ऊपर पड़िबो एवं तार इनडायरेक्ट इंपैक्ट आवर ह्यूमन बीइंग ऊपर पड़िबो। ह्यूमन बीइंग मध्य ये अर्थ रे तिस्तिबा संभव हो नाही जदि आमे बायोडायवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को आमे कंजर्व न करबा। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हाउ टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी। ओके, थैंक यू।